नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनीबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदह अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीही मैतन फकरिहतुमुह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुल मौलाना करीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिंदल मौती ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे गुज़िश्ता हमने एक छोटी सी क्लिप में जिक्र फरमाया था वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि लोगों को अलक़ाबात से ना पुकारो। उनका जो नाम होता है, जो पहचान होती है, उसी से मुखातिब होना चाहिए। और आगे की आयत उस दिन जिक्र किए थे कि इंशाअल्लाह ताला इस जुमे में और तफसील गुफ्तगू होगी। तो आज हमने उसी लहन में सूरह हुजरात की 12वीं तिलावत की आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों से मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो। जो गुमान होते हैं, जैसे कि हम किसी पे शक करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, कि अल्लाह ताला हमें बारहा ये हिदायत फरमा रहा है कि तुम इन गुमान से बचो। बिलाशुबा बाज गुमान गुनाह होते हैं, और ये जब आपको गुनाही की तरफ ले जाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। और जासूसी ना करो कि ये क्या करता है, कैसा कमाता है, किसको खिलाता है, ये जासूसी ना करो। और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। देखिए, गीबा क्या होता है कि मैं अगरचे किसी शख्स को, वो चोर भी है, अगरचे मैं उसको चोर कह दूं और उसके दिल को तकलीफ पहुंचे, वो गीबा है। हमारे माशरे में एक ये है कि जो है मुंह पे बोल दो, वो इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। कि कोई भी चीज उस शख्स को आप बोलो जिससे उसके दिल को तकलीफ पहुंचे। आप उसको ताकीदी करना हो तो बाजू लेकर अकेले में बड़ी सलाहियत से आप उससे समझा सकते हैं। तो यहां पे एक बेजान चीज जैसे मुर्दा की मिसाल दी जा रही है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीही मैतन फकरिहतुमुह। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? ग़ीबत का जो मुकाम दिया गया है कि मुर्दा भाई का जो गोश्त होता है वो खाने के बराबर। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का डर हासिल कर। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह उनके लिए बड़ा रहम, निहायत कर्म करने वाला है, बड़ा ही रहीम दिल है। तो जैसे कि हमने एक वाक़या में तारीख़ इस्लाम से लेना चाहता हूं। साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला
अन्हु। ये रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालू भी हैं और आप उन 10 सहाबियों में से है जो आशरा जिसको बशारत दी गई थी कि आप जन्नत। और मैं चंद आपके कारनामों में जंगों का मैंने देखा है कि किस किस जंग में आप साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिरकत फरमाए हैं। तो जो शुरू से जंगें हुई है, बदर की जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे ट्रेंच, जंगे खैबर, जंगे हुनैर, औतास, ज़ुहक़िसा, अक़रबा, पर्शियन, क़दिसिया, बर्न्स, बेबीलोन, सिटिस्फान, नहावंद और 651 हिजरी में तकरीबन आपने चाइना में इस्लाम को जाहिर फरमाया। क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना में उनका बड़ा नाम है। आपने चाइना गए, फतेह की, वहां पे इस्लाम का इंट्रोडक्शन दिया। फिर आप सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक आप बस सफरें करते रहे और जब आप वापिस आए तो आपको कूफा का गवर्नर बनाया गया। तो जो मसाजिद के मामले में जो इल्जाम लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं, मैं आज जो एक तो होती है ग़ीबत, मैंने जिसका जिक्र फरमा दिया, और एक होता है बोहतान, इसे भी ऊपर का दर्जा कि इंसान बगैर देखे किसी पे इल्जाम लगा दे। खुसूसन मसाजिद के मामले में, किसी भी मामले में, लेकिन खुसूसन मसाजिद के मामले में कोई लगा दे कि ये शख्स ने पैसे लिया है, खाया, तो बड़ी पूछ का सबब है। एक चीज से अल्लाह ने हमें हिफाजत फरमाई है कि इस जगह में ना चंदे का ऐलान होता है ना डब्बा होता है। जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं ये तरीका इख्तियार कर लेते हैं ताकि कल कोई गुंजाइश ना बन जाए कि कोई पूछे कि भाई पैसे कहां। इसके बावजूद लोग इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, जो लोग इल्जाम लगाते हैं या शराबी या नाच या गाना या सूदखोर, इस तरह के लोग होते हैं जिनकी गवाही एक्सेप्टेबल नहीं है। इस्लाम में इन लोगों की गवाही एक्सेप्टेबल नहीं। तो खास इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक ऐसा ही शख्स आप पे इल्जाम लगाता है कि आप पैसों का हिसाब सही नहीं रखते, अपने पसंदीदा लोगों को देते हैं और गैर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप इतने जंगों में जो हिस्सा लिए हैं, अपनी सारी जिंदगी हिजरत में, जंगों में गुजारी है, वो जब वापिस आए हैं एक उम्र के हिस्से में, तो आपको वहां का कूफा का गवर्नर बनाया गया, जिन पे जिम्मेदारी रखी गई। तो आप इसका जवाब नहीं देते हैं और वक्त के खलीफा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पेश कर देते हैं मामले को। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद जाते हैं कूफा इस मामले के लिए, और आप वहां पे जाके हकीकत को जानते हैं। फिर वो शख्स भी मौजूद होता है जिसने ये इल्जामात लगाए थे। तो खास इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा जाता है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा जाता है कि आप अपनी सफाई में कुछ पेश करेंगे। तो आप उसके हक में एक दुआ फरमाते हैं
जो इल्जाम लगाता है। अल्लाह इसे लंबी उम्र अता फरमाए। वो शख्स इतना जीता है कि वो मरने के लिए तड़पता है। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई है। वो शख्स इतना लंबा जीता है तो वो शख्स की सिर्फ जुबान चलते रहती है, हाथ पांव सारे उसके जो है नाकारा हो जाते हैं, बिल्कुल जिस्म पे कोई गोश्त नहीं, बिल्कुल हड्डियां नजर आती है। तो जो रास्ते से गुजरते कुछ कह गुजरता, फलाना फलाना फलाना, जो औरत जाती जो शख्स जाता कुछ ना कुछ कह गुजरता। एक मर्तबे नौजवान आता है, आके कहता है, ए बुढ़े मैं तुझे मारना चाहता हूं लेकिन तेरी हालत देख के मैं मारना नहीं चाहता कि तेरी जुबान इतनी गलत इस्तेमाल होती है। तो कहता है कि एक बुजुर्ग की ये बद्दुआ है, मैं चाहता हूं तुम मुझे मारो और खत्म कर दो। लेकिन ऐसा क्यों, नौजवान पूछता है। तो कहता है कि एक बुजुर्ग की दुआ है, यहां के गवर्नर की दुआ बद्दुआ है मेरे लिए हक में। वो दुआ थी लेकिन मेरे लिए हक में बद्दुआ है। क्योंकि अल्लाह के घरों के मामले में हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। एक शिकागो का वाकया आपके सामने जो मैं और हम सब चश्मदीद गवाह हैं। एक इमाम के साथ शिकागो में यही हरकत हुई कि उन्हें बदनाम किया गया, उनसे जगह छीनी गई, उनको बड़ा रुसवा किया गया, उन पे तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। वो अपनी इल्मी एतबार से खामोशी इख्तियार कर कर जगह भी छोड़ दी, हर चीज छोड़ दी। उसके बाद जितने मुलविस थे, जानी और माली नुकसानात हमने देखे उनके साथ। उस वक्त भी हम यही कहते थे कि देखो ये हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, अगरचे ये कोई गलती पर है भी, अगरचे वो रात के अंधेरे में अल्लाह के हुजूर झुक जाए और अल्लाह उसे माफ फरमा दे, क्योंकि अल्लाह की जात ही माफ फरमाने वाली। हम जो इस मौलवी मौलाना के ताल्लुक से जो गिबत कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे हैं, ये बताओ हम कहां जाएंगे? हमें कौन माफ करेगा? तो हमें चाहिए कि ऐसा हम अगरचे सुने भी तो इसका तायीद नहीं करना चाहिए। मैंने जितने इसमें मुलविस थे, मैंने कहा आप लोग रुजू होकर माफी चालो, वरना आपके लिए जानी और माली नुकसान है, इस दुनिया में भी और आखिरत। अल्लाह हम सबको कुरान हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Choose a topic from Surah Al-Hujurat. Last week we talked about a small message I gave out. Wala tanabazu bil alqab. Do not call people with the nicknames. Every person name was given when he born. That name will attach to his personality. So, having said that, if we remember, if the kid's born and his health is struggling or things happening, it's not supposed to happen. What is the advice? To change the name. Maybe the name meanings is not compatible with his personality, his or her. So they used to change the name. So we talk about these wala tanabazu bil alqab. Do not call people with the nicknames. Now this week we're talking about a ghiba, a backbite. Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu
min az-zanni inna ba'da az-zanni isman wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadakum an yakula lahma aqihi maytan fakrihtum ittaqullah inna allaha tawwabur rahim. Now Allah subhanahu wa ta'ala is talking with the people who have believed, who have brought iman. This topic, this ayats came for people who already embraced, who already come in Islam. O you who have believed, avoid much negative assumptions. We make assumptions. Oh, he's doing this, he's doing that. Probably he did this, he did that. Assumptions. Allah subhanahu wa ta'ala saying, avoid assumptions. Inna ba'da zanni. Indeed, some assumptions are sin. It's a bad deeds. May they will take you, if you piled up too many bad deeds, maybe will take you to Jahannam. Because you keep saying bad things about people without having evidence. And do not spy on each other. Don't try to find how he makes money, how he does, what he eats, how he drinks. Do not spy on each other, especially in our brotherhood. Do not spy on each other. These are the ayats of the Quran. And do not backbite. A ghiba. What is the ghiba? Actual description is, even you are a thief, if I say you in public you are a thief, that's ghiba, because it hurts him. You can take him on a side, you can explain this is a bad habit, don't do this. But if you say in public, maybe he get hurt. Allah is the one who forgives. Now we talk about the backbites. With this ayat I choose a topic from Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. He was the uncle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he was the one of the 10 Sahaba that was declared that he is going to be in paradise. Ashra Mubashara. How many battles, how many wars he attended in his life? Battle Badr, Uhud, Trench, Khaybar, Hunayn, Autas, Zuqisa, Aqaba, Persian, Qadisiyah, Burns, Babylon, Satisfan, Nahawan. Now in 651 Hijri he introduced Islam in China. You see his profile, subhanallah. That's why he was chosen one of the 10 Sahabi that he will be in paradise in his lifetime. So when he come back from China, all this time traveling, second Khalifa, Sayyidina Umar time is going on. He came back and he was appointed by Sayyidina Umar a governor of Kufa. Look at his profile. And he was governor, and somebody backbite him. Somebody did ghiba against him. That he manipulated the funds of Kufa. He never answered anything. He sent that matter to the Khalifa of the time, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala was shocked, and he traveled to hear to make a justice.
to hear the hearing. There was a hearing set. And he found not guilty. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu found not guilty. Because it was buhtan. Is higher than a ghiba. That you manipulating the funds of the masjid of the ummah. Sayyidina Umar asked, you want to say something at the end? He turned around towards the Qibla. Sa'ad ibn Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, he made a dua for the person who blamed him. He made a dua for him, that Allah subhanahu wa ta'ala give him a long life. Allah subhanahu wa ta'ala blessed him a long life. His wish to die, but he was not dying. He was laying down on the street, but his tongue was same way, talking bad about people. Anybody who passes by, he cursed them. He says something bad about them. A young man come back and say, I want to kill you. He said, kill me. He said, look at you, how I kill you, man. You have only bones left. The only thing is working is your tongue. He said, this is the curse from the governor. That's why I'm like this. That he made a dua for me to I live longer life. That's why I'm not dying. Allah subhanahu wa ta'ala keeping me for an example. I told you something bad, so maybe you get mad and you kill me. So imagine a small incident happened in this town. If anybody blames, especially about masajid, he's taking fards doing that. If you have no evidence, please shut your mouth. Shut your mouth. You become an ally. You will be punishable here in this dunya and akhirah. That's one of the reasons I don't want to put a box up here or make an announcement for donation. This is one of the fear that from Allah subhanahu wa ta'ala. But still people say those. Hey, probably he's driving 3 Mercedes. I don't have 3 Mercedes, but he said he drives 3 Mercedes. I recommend my Musalli to buy Mercedes because it's a good machine. But people will talk. You move on. But do not become part of it with those people. One of the incident happened in Chicago. Somebody blamed a Hafiz or Alim, or one of the oldest Alim that come on this land. They took his masjid. They blamed him. They dragged him out. As a witnesses, we saw whoever involved in those crimes. Allah subhanahu wa ta'ala punished them on this earth. And one of the punishment was going on. And I asked the brother, bring that Maulvi and ask him forgiveness. Maybe you will come back to life. And he was happy, he left. They talk about his family matters, they talk about his funds, everything. When minus degree, he was cleaning his snow. He was the first alim to come on this land. Some munafiqeen got it together and take that issue and throw him out. And we saw those brothers who paid their price in this dunya and they will pay in akhirah. Because imagine if the Hafizul Quran or Alim or Mufti, in the night if he goes down in a sujood, even though if he commit a crime,
who we are to judge him? Are we appointed from Allah subhanahu wa ta'ala to judge him? Are you given authority to talk about this? If that alim goes in the night in sujood and asks the forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him. He will be free, whatever he committed. What about you and me? Where are we going to go? Who's going to forgive us? That we talk bad about him? Throw him out? He don't even come in this area. May Allah subhanahu wa ta'ala blessed. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his darajat here in Akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala give him a sabr. He was out of the family for so many years. But the reason why I'm saying, because there is a rumors, people talk bad. Do not be part of it. This is the horrible crime. Buhtan is above than ghiba. You don't even see and you blaming somebody. That's buhtan. Ghiba, even you seeing it, you still cannot say that he did it. You can take him on a side and tell him, don't do this. In public you cannot say. There was a public hearings against this Imam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a hidayah to follow this beautiful Quran and Sunnah. Wa akhiru du'ana walhamdulillahi rabbil alamin.